Hi friends, welcome to my channel and kitchen, Delish and Relish. So we will make mango peda today. For this we need a small bowl. उसमें हम डालेंगे cornflour and थोड़ा सा पानी so that it is into flowing consistency. एक slurry जैसा form बना देंगे which is going to provide thickness to our pedas. Yes, will be the flow and we will keep it aside. Now I will take a deep bowl. We will add condensed milk. कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो आप मिल्क मेड का. आई हैव यूज्ड अमूल मिठाई हेयर. सो उसमें अब हम डालेंगे मिल्क पाउडर. अगेन द चॉइस इज़ योर्स. यू कैन यूज़ एनी ब्रांड एंड वी विल मिक्स इट. यहाँ पे थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है बिकॉज काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी का होता है कंडेंस्ड मिल्क. तो इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर हैंड आई कैन से. तो यू हैव टू मिक्स इट रियली वेरी प्रॉपरली. आपको दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ेगी. एक हाथ से आप बोल पकड़ोगे और एक हाथ से आप इसे मिक्स करोगे टिल द टाइम वी गेट अ स्मूथ सिल्की टेक्सचर. कुछ अच्छा खाना है तो थोड़ी तो मेहनत बनती है. सो यू कैन सी आफ्टर अराउंड 7 मिनट्स मुझे ये स्मूथ सिल्की टेक्सचर मिल गया था. बट इट इज़ ब्रेकिंग. सो हमें लाना है इसे रिबन कंसिस्टेंसी पे. फॉर दैट आई नीड टू ऐड देसी घी इनटू इट. सो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ देसी घी और इसको अब हम मिक्स करेंगे. इट विल बी स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी along with the ribbon consistency which will not break. You can see it will fall like a ribbon. यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए. नाउ आई विल टेक अ पैन, पुट मीडियम फ्लेम एंड वी विल पोर दिस मैंगो प्यूरी. नॉर्मल आम लेना है, कोई भी आम लो आप. दशहरी लो, अल्फेंसो लो, सफ़ेदा लो एंड उसको कट करके मिक्सी में ग्राइंड कर दो एंड द प्यूरी इज़ रेडी. जब ये सिमर करने लगे एट दैट टाइम यू हैव टू ऐड द कॉर्नफ्लावर स्लरी जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बनाया था. वही स्लरी हमें इसमें ऐड करना है. वी विल मिक्स इट. द फ्लेम इज़ मीडियम. And trust me, the taste is absolutely divining with a fine blend of sweetness. You will enjoy this peda, but don't leave the video in between because at the end I will be sharing a very simple tip to give a twist to your recipe. So you have to mix. It will take time. At around 10 to 12 minutes लग जाएगा आराम से आपको मीडियम फ्लेम में इस मैंगो को पकाने में. So you can see you can keep mixing. Let it simmer. We have to evaporate the excess of water. Now I am going to add this condensed milk and milk powder का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे with the help of a spatula. Now you have to keep in mind कि जब भी आप मिक्स करोगे take it from the side of the pan so that it doesn't stick and is properly cooked. Mango is enriched with vitamin A, C and E. It is a very rich source of iron and flavonoids, and it also helps in improving metabolism of the body and cure the eye problems. So this mango peda will not only provide you the sweetness, but it is really good for health in a very sweet form of recipe. So I guess friends you will enjoy this. So इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 2-3 drops of magic color to provide that smooth yellow color to my pedas. There is a very popular saying
keep calm and eat aam, but we will eat aam in the form of a peda. So फ्रेंड्स, यू कैन सी इसने किनारा छोड़ दिया है और ये आपके स्पैचुला के साथ मूव करने लग गया है. दिस टाइम आई एम गोइंग टू ऐड क्रश्ड कार्डमम, कुटी हुई इलायची. नॉर्मल ग्रीन इलायची को मैंने क्रश किया है ओखली में एंड अपना मोटा पेसल जो होता है एंड मिक्स कर दिया. नाउ यू विल सी कि ये धीरे धीरे विद इन 2 मिनट्स इट विल लीव ऑल द साइड एंड द होल डो फॉर्म टाइप का टेक्सचर इसका हो जाएगा. This is what we want. Switch off the flame, take the pan out and grease a bowl with little bit of desi ghee. I guess only half teaspoon you need. And इस पे अब हम ये डो डालेंगे. And बस इसकी अब हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे लेमन साइज, like this. Roll it. It should be smooth. Flat it with the finger and your peda is ready. Or you can give a thumb impression in between so that exact pede ka look आए and you can put some dry fruit over it like this. एंड इसी तरीके से हम बाकी पेड़े भी फटाफट से बना लेंगे. या हम ओखली अपना जो मोटर पेसल होता है उसका लेके उससे भी हम इम्प्रेशन दे सकते हैं लाइक दिस. परफेक्ट. एंड वी कैन पुट सम कैश्यू और पिस्ताशियो बिकॉज मैंगो का फ्लेवर काजू या पिस्ता के साथ बहुत अच्छा आता है. So now you can bite into the wonders of a juicy golden mango in the form of a mango peda. Friends, if you are liking my recipe, please don't forget to like, subscribe and comment on my channel and do share the link with your friends and family. Till the time we meet again, enjoy this yummy mango peda. And the twist is, if you want to convert it into the chocolate flavor, just dust little bit of cocoa powder into it and you will enjoy your chocolate mango pedas. I hope you like my recipes. Bye. Take care.